हम द कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि जो फोर्स है, फोर्स इट इज डिफाइंड एज ए पुल और पुश which produces or tend to produce, destroys or tend to destroy motion in a body, increases or decreases the velocity of a body, or changes the direction of the body. ठीक है? So there are different types of forces. Different types of forces. ठीक है? नंबर फर्स्ट जो फोर्स है उसको हम कंटैक्ट फोर्स, contact force means the force which comes into play due to actual contact between the source and the object. दो बॉडियों के दरमियान जब एक्चुअल कंटैक्ट होगा, दैट फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, दैट इज कॉल्ड द कंटैक्ट फोर्स. द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले due to actual contact of source and object, that is between different bodies जो होते हैं, different bodies is called, उसको हम बोलते हैं contact force. contact force फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर मतलब हम किसी पे हथौड़ा मारेंगे वो वहाँ से और मतलब ये हमें फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन एटस्ट्रा आर द कंटैक्ट फोर्स. ठीक है? नंबर सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इफ the friction is present at the point of contact of two surfaces and two objects move actually related to each other, that means without losing the contact, then the frictional force originates and opposes the motion of the object. This force is perpendicular to the normal reaction. So when two bodies are in contact, when they roll or move into one another, ठीक है, then a force comes into play which destroys the motion of the body. That force is called force of friction. Force of friction between force of friction. Suppose जब हम क्रिकेट बॉल मारते हैं ग्राउंड पे, तो there is a force of friction between ground and this cricket ball. That force of friction destroys the motion of this cricket ball. That force is called the force of friction. ठीक है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड. हाँ, ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या है, जो आयर रेजिस्टेंस, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है? नंबर थर्ड है एक्शन एट ए डिस्टेंस, या इनको हम बोलते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्सेस. वो फोर्सेस दैट कम्स इनटू प्ले विदाउट एनी एक्चुअल फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज. दीज फोर्सेस आर कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं क्या, फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स एंड एक्शन एट ए डिस्टेंस. These forces are due to the inherent properties of the body. For example, हम magnetic force it exerts force at a distance on the magnetic materials. ठीक है? So without contact it exerts force. या electric force, without contact it exerts the force. This is the inherent properties of the bodies. The force due to the inherent properties of the body without any actual contact, that is called the action at a distance force या non contact force. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स है दूसरा. तो ये आपको पता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द बॉडीज, अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडीज. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द बॉडीज
which always acts in downward direction. That is called the gravitational force. And force due to the earth on the bodies, the force with which the earth attracts the bodies towards the center, that is called the gravitational force. इसी तरह है दूसरे भी फोर्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्सेस है, दिस इज ड्यू टू द चार्ज present in a body. ठीक है, magnetic force, this is due to the magnetic properties of the body. Force is due to the interconnection. Force due to the interconnection. वो भी एक force है. This force comes into play when one body drives another body due to the interconnection between for a cart and the horse. Horse drives the cart. This is the force, interconnection force. Okay, they are connected with each other, and for this horse pulls the cat, that is called the force due to the interconnection. So these are the different forces of the different types of the forces. So force क्या है? Force is push or pull, whether in contact or in at a distance. That is called the force. Thank you.